Good evening students, welcome to Commerce Campit Odisha. Today we will start with the MCQ discussion of Indian Contract Act. Hela Indian Contract Act is a very vast chapter, but sethre ko portion ro amko cover karir achi and ko portion is very relevant for the exam perspective seda ame dekhiba. Indian Contract Act tame dekhiथिबो foundation रे भी अछि inter रे भी अछि हला तो the content is same but जे तो questions अलगा अलगा पचारचंदी तो the way we are covering would be different बुझला तो जोड़ी दरकार पड़ছে आई विल गिव यू अ चार्ट जोड़ा कि तुम एग्जाम आगे रेफर करबो एंड बर्तमान को बाकी सब कोन बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक एक्सप्लेनेशन रहबो ठीक अछि एंड मन रखिबो कि सब जिंस फिल इन द ब्लैंक्स आगे से बेसी पचारछि फिल इन द ब्लैंक्स रु से कोन बेसी पचारछि हमरा एमसीक्यू क्वेश्चंस ठीक अछि तो क्वेश्चन पूरा पढ़ला परे ट्राई टू आंसर या A mortgage executed by minor is dash तमे बेसिक जहाँ भी बुझुच सेति की कहबो हैला एमती नाही कि हां एमती नाही कि भाबीगिरी से पूरा चैप्टर बुझिला आगा तमे कहि परियो कहि एमती किछि नाही हैला A mortgage executed by minor is void कोन पे void जेतु माइनर द्वारा हेथिबा जिंस केबेले मैक्सिमम वैलिड होनी unless they are certain cases minor माने के minor is a person of the age below 18 years बुझला से जहां भी एक्ट करिवो इट्स ऑलवेज कंसीडर्ड void तो मॉर्गेज माने कोन लोन आनिया पे जहां भी माने गिरवा रखी की लोन आनिबार if there is no consent the agreement is obviously we have 10 essential elements कोन अछि हमर essential elements कहि परियो essential elements कौन कौन अच्छी ऑब्जेक्ट थिबो लीगलिटी थिबो कंसिडरेशन थिबो हमर फ्री कंसेंट थिबो कौन कौन अच्छी को लेख एडी फर्स्ट पॉइंट लिखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेकेंड पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन थर्ड पॉइंट हमर कौन अच्छी थर्ड पॉइंट इज legal relationship legal relationship legal relationship तापरे free consent free consent free consent then certainty certainty lawful object lawful object lawful object then possibility of performance possibility of performance possibility of performance possibility of performance writing and registration writing and registration writing and registration not expressly declared void not expressly declared void not expressly declared void आ गुटे कौन थिला capacity of parties last one is capacity of parties
सांगे सांगे लिखि दियो से पाखरे बुझिला तो वी हैव 10 एसेंशियल एलिमेंट्स तो आउट क्वेश्चन कौन फॉर्म हे परियो नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज 10 एसेंशियल एलिमेंट्स सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफर भी वैलिड ऑफर थिबार अछि एक्सेप्टेंस भी वैलिड हेगी थिबार अछि सेकेंड थिंग इज लॉफुल कंसिडरेशन कंसिडरेशन जहाँ भी दब माने से कहो कि ए पर्टिकुलर काम करदेले मो तो पे से लोक को मार देबी तो दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन द कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल हला लॉ एक्सेप्ट करथिबा कंसिडरेशन रयर अछि देन कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज माने जे भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अछंदी सब मेजर हेथिबे माइनर केले नथिबे साउंड माइंड हेथिबे हला आ के अलगा कंट्री रो कि एनिमी कंट्री रो नथिबे सिमती टाइप अछि राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन सब जिनस लीगल डॉक्यूमेंटेशन थ्रू रे हेबा कथा देन नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड माने जो जिनस पई कॉन्ट्रैक्ट होची से जिनस लॉ मना कर नथियो से जिनस कोन लॉ मना कर नथियो तापरे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस माने को जिनस कहउथिबे से जिनसटा हबो कहिगी माने परफॉर्मेंस हेबा में कैपेबल रयर अछि फॉर एग्जांपल जदी से कहउची कोन एतिकी जिनस प्रोडक्शन करिगी दे आमो कौन ग्राउंड नट्स तू प्रोडक्शन करिकी दे 2 kgs कि 3 kgs एतिकी मंथ्स रे तो सेटा हेई पारियो 200 kgs तू आमको गुटे वर्ष भितर देली कहले सेटा कौन परफॉर्मेंस रो कैपेबिलिटी नाही सेतिकी जिनस केबेले हेई पारियोनी देन से कहउची फ्री कंसेंट माने जोर जबरदस्ती न थेगी निज इच्छा रे दि जण पार्टीज कोन हेथिबे एग्री हेथिबे देन सर्टेनिटी माने दि जण जारो ऑब्जेक्टिव जहा भी फिक्स हेगी अछि सर्टेन थिबार अछि अनसर्टेन ऑब्जेक्टिव्स न थेगी सर्टेनिटी थिबार अछि देन लीगल रिलेशनशिप दि जण जेतु लीगली गुटे डॉक्यूमेंटेशन थ्रू रे कॉन्ट्रैक्ट को एंटर होचंदी तो लीगल रिलेशनशिप थिबो लीगल रिलेशनशिप रो मीनिंग होची कोन ना जणे भूल करले आ जणे ता ऊपर कोन केस करि पारे क्लियर टोटली बुझला 10 एलिमेंट्स ना किछि डाउट अछि कार देखो लॉफुल ऑब्जेक्ट रो मीनिंग होची कॉन्ट्रैक्ट कोन पे होथियो कोड ऑब्जेक्टिव लागि होथिबो कोन ले गोटे ऑब्जेक्टिव को फॉर एग्जांपल ट्यूशन पढेबार सेतबे गोटे कॉन्ट्रैक्ट होची तो सेडा रे कोन ना इमती थिबार अछि कि हमहु जे एतिकी फीस दोची हमें ताको पढौचु किबा जदि एतिकी फीस दोनी त हमें कोन करे ताको रेस्ट्रिकेट कर देबा हला आ कुडीले पढेओ देबानी कि आ केबेला हमें पढिबानी सिमती जिंस जागो ऑब्जेक्टिव हेई पारियोनी काहे गेले सेडा लॉफुल नै सिंदी करियारो लॉ हिसाब रे ठीक नै बुझिला ना बट बाकी सब जिनस कौन जो भी ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स करचु सेडा लॉ कौन एग्री करथियार अछि लॉ केबेले सेडा को प्रोहिबिट करियार नै जदि प्रोहिबिट करची तो से ऑब्जेक्टिव धरिके हमें कॉन्ट्रैक्ट करि परिया बुझिना जदि भी बुझुनी पचारि पारिबो मु अगेन अलगा एग्जांपल देके बुझेबी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो मिस्टेक रो क्वेश्चन दा सेडा माने मिस्टेक रो क्वेश्चन माने मिस्टेक टॉपिक रो कौन वैलिड हबो an agreement caused by unilateral mistake of fact तो एडा पे तुम गोटे चार्ट बनार अच्छी राइट ऑन मिस्टेक रो मीनिंग जानचो किछि भूल हेबार खाली सानो चार्टा मिस्टेक इज ऑफ टू टाइप्स मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट लॉ रे कौन होची लॉ कैन बी ऑफ द ओन कंट्री और what foreign country own country and foreign country and mistake of fact रे कौन होची ना two types unilateral mistake and bilateral mistake unilateral mistake and bilateral mistake unilateral mistake and bilateral mistake unilateral mistake and bilateral mistake
तो मिस्टेक रो केते प्रकार क्वेश्चंस आसी परिबो 8 to 7 to 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम हियर हला 7 to 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर अप हेयोच ए गुटे चार्ट रे जदि भल से पढुचो तो फर्स्ट थिंग होची मिस्टेक ऑफ लॉ रे माने कोन आवर ओन कंट्री माने आम कंट्री भितरे थिबा किछि भी लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस किछि आमे बुझिलोनो कोडे प्रोविजन हमको बुझा पड़लानी ता लगी कोन भूल हेयला कॉन्ट्रैक्ट एडा कोन जानछ ना फॉरेन कंट्री रो किछि प्रोविजन हमको बुझा पड़लानी जा लगी कि हमरो भूल हेयला कॉन्ट्रैक्ट भितरे दिस इज द कोन मिस्टेक ऑफ लॉ माने रूल्स ऑफ ओन कंट्री rules of own country mistaken एडी कोन rules of foreign country mistaken rules of foreign country mistake unilateral mistake और bilateral mistake very important unilateral mistake रे कोन होची ना one party to the contract रे minimum दीडा पार्टी थिबे ना नहीं दीडा पार्टी थिबे हैला दीडा पार्टी भितरे को गुटे पार्टी मिस्टेक हेइथिबो माने गुटे पार्टी बुझिबारे मिस्टेक हेयला वन ऑफ द पार्टी लेखो वन ऑफ द पार्टी इज मिस्टेकन अबाउट द वन ऑफ द पार्टी इज मिस्टेकन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल मिस्टेक रे कोन हेथिबो दिजन जागो सेडा भूल रे बुझा पड़थिबो both or two parties to contract must have mistaken about the subject matter mistaken about subject matter श्रेया पानी बोतल ले लिखिल एति एबे देखो से क्वेश्चन डा एबे आंसर करो एन एग्रीमेंट कॉज्ड बाय यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एन एग्रीमेंट कॉज्ड बाय यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज वैलिड बुझिला इज वैलिड कोडा वैलिड कोडा वॉइड कोन सेथरे थिबो मिस्टेक ये रे तमे गुडथरे देखिकी ता तळे लिखि दबो कोर्शन इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 15 of the Indian Contract Act हैला सेक्शन नंबर्स नॉट रेलेवेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव सेक्शन से जनरली पचारुनी A threatens to shoot B if B does not agree to sell his property to A at a stated price A कौन करची B को नंबर जो फर्स्ट कॉल दैट वन नॉट आंसर कोई ऐसा नहीं है आंसर दिस हां ठीक है A threatens to shoot B हैला A कौन करची जबरदस्ती करची B को शूट करी दबो कहिगिरी if B does not agree to sell his property to A at a stated price A जदि एग्री करूनी stated price रे सेल करिबा पई तो B's consent in this case has been obtained by dash the answer would be coercion तो एडा पई हम कोन फ्री कंसेंट रो एलिमेंट्स गुडा को लिखिबा को पड़िबो नले बुझी परिबोनी एति भितर थिबो हमर कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस बुझिला ना से जागो लेखो जोड़ा जोड़ा होची से पाखरे पेपर रे टेस्ट भी कर दे पारियो हैला free consent
free consent is said to be affected by गोटे होची coercion, गोटे होची कौन coercion and second thing होची undue influence, coercion and undue influence, coercion and undue influence. गोटे गोटे लाइन खाली लिखि दियो से पाखरे. कोर्शन माने होची जोर जबरदस्ती करिबार, थ्रेटन करिबार. कोर्शन अंडर लेख यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू मेक समवन, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू मेक समवन do a particular task, to make someone do a particular task, to make someone do a particular task माने कौन थ्रेटन करिवो, धमकाइबो ताको गोटे जिंस करिबा पई, दैट इज कोर्शन. बुझे पड़ला. अनड्यू इन्फ्लुएंस तळे लेखो, वेरी इंपोर्टेंट. साइकोलॉजिकल और emotional manipulation to gain an unfair advantage, माने होची कौन एग्जाम्पल बॉस एंड एम्प्लॉय. बट एडी कौन हो जी एग्जाम्पल रे टू फ्रेंड्स भी हो पारियो हैला, स्ट्रेंजर्स भी हो पारियो, केले हो पारियो. बट अनड्यू इन्फ्लुएंस रे कौन हो जी गोटे पर्सन आ गोटे पर्सन रु हायर अथॉरिटी रे थिबो, हाई अथॉरिटी थिबो जिंदगी की कौन सी आराम से आपको इन्फ्लुएंस करि परिबो से कामडा करबा पई. बुझिला कौन हैला टू स्ट्रेंजर्स सेडा आ कोडा बुझुनी. unfair advantage to gain an unfair advantage. बुझिला coercion and undue influence रो मीनिंग दा एबा आसेडी. तो सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन्स डैश. कौन डिफाइन करची सेक्शन ऑब्वियसली पचारनी तो एडा लेख फ्रॉड. एडा गुटे इंपोर्टेंट पॉइंट मार्क कर. इफ एन एग्रीमेंट कॉज्ड बाय यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, if A unlawfully detains B's son in order to coerce B to enter into the agreement, the case would be covered within section number dash. से कोची ए अनलॉफुली डिटेन्स बीज सन कागो जब माने कागो इन्फ्लुएंस करिया पई, कागो धमकिया पई कोन. हाँ तो 15 तो आंसर होची कोन एडा होची गुटे कोर्शन रो केसटा. से कोन पे कोर्शन रो केसटा ना जेतु से थ्रेटन करला हैला, धमकेला सेति पे. तापरे व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड. फ्रॉडुलेंट मीन्स ऑब्टेन करिकि जदी कॉन्ट्रैक्ट करूचंदी तो सेडा कोन हबो, ऑब्वियसली voidable हबो. बुझी पालो voidable हबो. एडा इंपोर्टेंट मार्क करो. मु कोन कहूची if the consent of the party to the contract, contract रे जेति भी पार्टीज अछंदी सेमाने कोन सेमानंगर जहा भी कंसेंट अछि माने सेमानंगर जहा भी राइट अछि सेडा कोन फ्रॉडुलेंट मेथड्स रे तांके आनी देले. बर्तमान को से लोक आने जानि नांदी कि सेडा फ्रॉडुलेंट मेथड्स रे आनी चंदी कहिगिर जेतु सेति पे सेडा कोन कंटिन्यू होछ. बट वंस जानले कोन हबो से void कर दबो ना नै, कैंसिल कर दबो ना नै सेडा. दैट्स व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable. बुझला ना नै. तापरे when there is duty to speak, keeping silence is dash. एडा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. जोड़ी माने जोड़ी कथा बा दरकार
से कथा न कहले से जिनसटा बहुत माने खराब सिचुएशन को पळेबो से केस रे जदी से साइलेंस मेंटेन करची सो दैट विल बी काउंटेड एज फ्रॉड कौन पे सिंदी काउंट हबो जेतु से जदी कथा ही थांदा से जिनसटा सीन माने लाइक नॉर्मल ही थांदा स्टेबलाइज ही थांदा बट ही चूज टू कॉम्प्लिकेट दैट से कॉम्प्लिकेट करबा पे कोन साइलेंट रहला तो हमें कोन ताको फ्रॉडली कहिगी ट्रीट करियो when the person making a false statement believes the statement to be true and does not intend to mislead the other party to the contract it is known as कौन थिला सेडा गोटे पर्सन जान जानी कि जदी करछि सेडा फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन वेरी गुड तो जिनस कौन सी निजे जाननी सी भाभी कि जिनसटा सत सी न जान कि जदी गोटे जिनसटा को कहि दउछि एंड सेडा फॉल्स अली कहि कि प्रूफ होछि तो इवेंचुअली इट विल बी कॉल्ड एज मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड माने कौन से जानिगिरी से जिनसटा प्रमोट करिवो दैट इज फ्रॉड बट एडी कौन से जानिनी आ से कौन प्रमोट कर डैश मीन्स एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ माने लॉ डा प्रमोट करिवो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉ को लॉ बेसिस रे इंग्लिश लॉ बेसिस रे हिच हैला एडा भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट कौन मामा बुक रे नहीं पचारि सी सेति पई तो इंपोर्टेंट कहली अजता जिनस बहुत दबो पचारिया जिनस किछि दबोनी सी Section 2b defines when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes dash. Proposal when accepted becomes promise. A proposal ro other name कौन आमरो? Proposal ro other name is offer. बुझिला? When the consent of the party to the contract has been obtained by undue influence, fraud or misrepresentation, the contract is dash. The contract is dash. Undue influence रे हो, fraud रे हो, misrepresentation रे हो, जदि किछि obtain होची, तो that is void ना voidable? Void ना voidable? Voidable. कौन पे voidable हैला? एबे reason कहली? कौन पे voidable हैला? Voidable रो meaning जानछो तो? It can be made void at the option of one or more parties to the contract. माने बर्तमान को से जानिनी कि ए जिनसडा इमती इमती हेची कहिगिरी अनड्यू इन्फ्लुएंस रे तो से कर देला के ताको गुडे हेल्प करियो आसले सेडा void हे जिवो जदी fraudulent methods adopt करी कि जदी कर देची तो सेडा भी कोन हबो void हे जिवो वंस जदी जेतोळे से जानिबो कि एडा फ्रॉड हेगिरी हेची कहिरी मिसरिप्रेजेंटेशन जदी हेची आ से जानला कोन ए लोकडा न जानि कि मते कहि देला जिमिति बे हो भूलडा तो भूल लागा ना बुझिला ना से जानि को न जानि को तो जेतोळे जानिबो ए तीनटा जिंसरो कोडा गुटे तो सेडा कोन हबो void हबो तो सेते जे एडा कोन थिला voidable थिला क्लियर कांसेप्ट इज क्लियर देन ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर डैश void एडा डायरेक्टली void हे जिवो काहेकि फर्स्ट हमको जाना अछि कि से जिंसडा नॉट एक्सेप्टेबल बाय लॉ कहि an agreement created by words spoken or written is called dash agreement agreement created by words spoken or written नहीं वैलिड आओ ये नहीं से कुछ एग्रीमेंट रो टाइप टा कोन एग्रीमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स वेरी गुड एक्सप्रेस एग्रीमेंट हैला स्पोकन और रिटन वर्ड्स एग्रीमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स कौन कौन अच्छी हमरो एक्सप्रेस इम्प्लाइड एंड रिटन एक्सप्रेस इम्प्लाइड एंड रिटन एग्रीमेंट्स एक्सप्रेस माने कौन से वर्ड्स रे सेडा बुझेबो इम्प्लाइड माने कौन तार जहाँ भी एक्टिविटी अच्छी सेथिरु बुझा पड़ जिवो बुझिला ना अरे बाप रे कौन कर रिटर्न माने कौन लिखिकी दब an agreement consists of reciprocal promises between the dash parties कितना parties थाउचंदी obviously 2 parties that's it
Parallel contracts are also known as, mark it important, parallel contracts are also known as simple contracts. माने किछि नाइ रे खाली नाडा एडा normally contracts गुडार other name होची parallel contracts. An offer made by words spoken or written is called dash offer. Again same thing, express offer, express offer. जहाँ भी words through रे express करूची that is express offer. Partial acceptance of offer results in dash offer. Partial acceptance of offer results in dash offer. जदि गोटे लोक जिनसटा को अधा कौन ऑफर केतुरा नहीं ना नहीं ऑफर जिनस नहीं जनरल जिनसटा एडा जदि ऑफरटा अच्छी सेडा तमे इधर हां कयो कि नाइ कयो जदि सेडा अधा तमे हां कहउच हां अधा तमे हां कहउच तो तमे कोन कयो उल्टा कयो कोन मु एती करी बाकी सब तो आउ काउ कोन करियो कर दे तो एडा तमे कोन कहउच काउंटर कथा कहउच ना नहीं काउंटर ऑफर करछ बुझिला ना तो दिस इज काउंटर ऑफर एडा बहुत थरे पचारथिला एग्जाम रे जदि न बुझिले म आथरे बुझेबी बुझिला कौन पे काउंटर ऑफर अ टेंडर इज अ डैश ऑफर बेसिक तापरे व्हेन काउंटर ऑफर इज गिवन द ओरिजिनल ऑफर ऑब्वियसली काउंटर ऑफर जदि दोची तो ओरिजिनल ऑफर ता कोन हे जिवो हमरो लैप्स हे जिवो द ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी डैश this is also important for an acceptance to be valid this must be absolute and unqualified माने कौन absolute and unqualified माने कौन से कथाटा को माने जहाँ भी से एक्सेप्टेंस कला से किछि से ताऊ काउंटर ऑफर किछि कर नथियो किछि कंडीशंस इंप्लाई कर नथियो से विषय रे किबा कोन किछि भूल भाल सेतरे फाइंड आउट करी कहि नथियो सब जिंस कोन एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड सेतळागा एक्सेप्टेंस ता हमें वैलिड ही चली कहि कहया 24 टा देखो an agreement to agree in future upon terms to be settled afterwards between the parties is not dash an agreement to agree in future upon terms to be settled afterwards between the parties is not dash valid कौन पे वैलिड नहीं से कुछ देखो अग्रीमेंट ता होची गुटे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट पे माने ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट क्लियर फ्यूचर पीरियड रे सेला सेटल हबो कोइ कि अग्रीमेंट पे एग्रीमेंट करछ तो काउंटर जिंसडा एडी कोन के बेले वैलिड ही पारिबो दैट्स व्हाई एडा कोन नॉट वैलिड acceptance once given cannot be dash कोन एक्सेप्टेंस जदि वंस दे दो चंदी तो सेटा कोन रिवोक ही पारिबनी कैंसिल ही पारिबो हां एमसीक्यू क्वेश्चन से जानि पारिबो रिवोक ही पारिबनी इट कांट बी टेकन बैक अ टेंडर एंड अ बिड एट एन ऑक्शन सेल आर डैश को टाइप रेडा जनरल ऑफर ना पब्लिक ऑफर एडा तो ऑफर आंसर टा जनरल ऑफर बुझिला ना ऑफर इज ऑफ टू टाइप्स जनरल एंड स्पेसिफिक तो एडा होची जनरल ऑफर माने कोन समस्त को पब्लिक एटा लार्ज पर्टिकुलर बस केते बढ़िया बुझी छी टिके सोई उठ था तू भल से टिके रेस्पोंड कर सेति पे तो रेस्पोंड कर जी अ कोटेशन इज डैश एडा भी इंपोर्टेंट कोटेशन इज इट इज नॉट एन ऑफर कोटेशन माने कोन से कहूची कि तमे केति की माने कॉस्ट रे ए बिल्डिंग दा कंप्लीट करि पारिबो हम कोटेशन उडा को दियो तो एडा कोन हला ऑफर करियो कहूची तो दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर से डाकुची हमको ऑफर करिया पई तो कोटेशन इज एन इनविटेशन टू ऑफर quotation is an invitation to offer a proposal when accepted becomes dash promise eta to jancho then the term proposal used in the Indian Contract Act is synonymous with the term dash eta भी discuss कर देथिल already proposal रो other ये होची कोन हमरो offer
The term proposal or offer has been defined in the section number 2A. So this is irrelevant. When the offers made by two persons to each other containing similar terms of bargain cross each other in post, they are known as dash. Very important point. से कहूची कौन सिमिलर टर्म्स रे बार्गेन करूचंदी हैला बार्गेन करचंदी माने ये ताको ऑफर दोची ये आपको ऑफर दोची बस दैट इज क्रॉस ऑफर हैला तो दिस इज इंपोर्टेंट बुझिला ना बुझेबी आउथरे क्रॉस ऑफर रो मीनिंग दा बुझिला माने देखो से वंस गुटे ऑफर करला सुनो सुनो कहूची नहीं नहीं मु कौन कहूँ कहले काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर डिफरेंस न बुझले भूल है काउंटर ऑफर माने होची मु जान कोडी कंफ्यूज हेबे पिलाने जनरली तमे जदी किछि ऑफर माने किले ऑफर करछि तमको तमे पार्शियली सेटा को एक्सेप्ट करछो कहूछ कोन पार्शियली मु एतिया करी आ बाकी मु करी तो दिस इज अ काउंटर ऑफर डायरेक्टली तमे कहि देलो से लोक आ किछि कहयनी हां कहि दो जदि से लोक कहूछ ना ए कामडा जदि तू करू न कहले आ गुडे काम मु तते देबिनी कि एति पोर्शन आगा देबी हेले तमे कहलो कोन ठीक अछि मु एति एति करबी एति एति पैसा मते एडाउ दियो सेडाउ दियो तो कंटिन्यूअसली कन्वर्सेशन ऑफ ऑफर्स इज गोइंग ऑन से जिनसडा रही लगी सेडी नहीं तो क्रॉस होउची आगा बार्गेन होउची आगा तो दिस इज क्रॉस ऑफर सो दैट इज द की पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर पूछा पड़ला तो when the proposal or acceptance is made otherwise than words the promise is said to be implied very good तो से वर्ड्स रे कहूनी तो किन कहबो एक्सप्रेस हेइथबो ऑब्वियसली बुझिला ना जदि मते कुआ होची कि क्लास करिवार अछि कोर्स सारियार अछि तो मते अलगा रे कुआ हबो कि तते डेली आसी कि क्लास करियार अछि कि तते एते समय करियार अछि तो दैट शुड बी माय हेडेक मु किन करियार अछि केते दिन करियार अछि कोन करियार अछि सो दिस इज implied various modes of revocation have been of offer have been described in dash section number 6 irrelevant an advertisement inviting tender is dash again it's an invitation to offer and invitation to offer difference बुझछो ना offer or invitation to offer is general offer कोन promise to do something or abstain from doing something invitation माने कोन तमे offer करो गई कि मु पचाच प्लीज ऑफर मी सम डेट्स माने मते कुओ कि को डेट्स भितर हमें क्लासेस करि परिबा तो यू पीपल विल ऑफर मी समथिंग दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर मो तरफ रु आसीबो ऑफर ता तमको मु पचरी कोन इनविटेशन टू ऑफर goods displayed in the shop window with a price label will amount to dash this is also what goods बाहर लिखा है तो सेटा कोन इनविटेशन टू ऑफर बुझिला ना अरे देखो goods displayed in the shop window कौन पे से डिस्प्ले करछि एडवर्टाइजमेंट हिसाब रे बुझिला ना मार्केटिंग हिसाब रे तो दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर तापरे an offer which is allowed to remain offer for acceptance over a period of time is known as dash एडा important mark करो this was asked in the past question कौन मामा continuing offer standing offer और open offer का बुझिलानी मते पचरे बुझी स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग माने कौन करछि से देखो an offer which is allowed to remain offer for acceptance over a period of time बहुत दिन पई सेडा कोन ऑफर करी के रखी दै चंदी तो दिस इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर बुझिला when a contract is perfectly valid in its substance but which cannot be enforced because of certain technical defects this is called a dash से कहूची कि देखो माने कॉन्ट्रैक्ट वैलिड अछि किछि एलिमेंट्स वैलिड अछि बट सेडा एनफोर्सेबल हेई पारनी कोन पे हेई पारनी किछि टेक्निकल डिफेक्ट्स अछि माइनर मिस्टेक्स अछि माइनर इश्यूज अछि जा लगी कि सेडा एनफोर्सेबल हेई पारुनी तो जदी एनफोर्सेबल हेई पारनी दिस इज अ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल जोड़ा हेई पारनी दैट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन रे आगा हमर आंसर ता अछि अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हेची गुड्स डिस्प्ले टा कोन हमर इनविटेशन टू ऑफर अ काउंटर ऑफर इज अ रिजेक्शन ऑफ कोन
को ऑफर टा को हम रिजेक्ट करछु ओरिजिनल ऑफर टा को then when the particular mode of communication of acceptance is not prescribed and the parties are not in each other's presence the most authentic mode of communication of acceptance is dash when particular mode of communication of acceptance माने कौन acceptance टा हमको जणया पई गुटे मोड टा सिलेक्ट हेनी प्रिस्क्राइब हेनी and the parties are not in each other's presence माने पाखो पाखरे नाहंती गोटे ऑफर टा दिया आइची बट से ऑफर टा तांको जणया पई तांको आउ को मोड ऑफ माने कम्युनिकेशन ना इजी रे होनी तो तण तांके पाखे पाखरे नाहंती तो कौन कले सेडा बेटर हबो कौन कले बेटर हबो को थ्रू रे पठेले बेटर हबो ईमेल तो से कोची कोन लेटर बुझला तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज द लेटर तो लेटर में भी ईमेल और अ फिजिकल लेटर जहाले ही परिबो बट कांसेप्ट होची सेडा when a person without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate he makes dash mark it important से पर्सन जे भी अच्छी से तार फाइनल विलिंगनेस को होने तार लास्ट माने सब फाइनल इच्छा कोनी जिंदगी हमर प्रिया एबे जे गोटे फाइनल नंबर टा डिसाइड करि पारलानी सिंदी कोन से गोटे फाइनल तार विलिंगनेस टा कहूनी ही प्रपोजेस सर्टेन टर्म्स on which he is willing to negotiate माने मु कहूची कोन मु एक्जेक्टली गोटे डेट कहूनी मु 28 रे एग्जाम करियली मु कहूनी मु कहूची कोन 20 रु 30 जी मु चाहूची एग्जाम करिबा तो तमे मते को तमे जतले मते कह 25 26 27 28 तो मु नेगोशिएट करी की अराइव हेबी ए डेट रे तो मु तम कोन चाहूची तमडो आई एम आस्किंग यू टू ऑफर तम ऑफर करिया चाहूची तो एडा कोन हैला हमरो invitation to offer बुझला ना निद्र अच्छोरी बुझला तो he makes invitation to offer तापरे notice in the newspapers inviting tenders is dash again same thing invitation to offer tender word टा पळा आसला कहले कोन से न्यूज़पेपर रे दो एडवर्टाइजमेंट दो जहा दोची दो इट्स invitation to offer if there is no consideration then the agreement is what void consideration is defined under section 2d the latin term quid pro refers to dash something in return माने एटा एक्चुअली कंसीडरेशन रो लैटिन टर्म दा हैला ब्रैकेट रे लिखि दियो लैटिन टर्म फॉर कंसीडरेशन Latin term for consideration. Consideration must move at the desire of dash. Promise. Promise first ता हिसाब रे कहल अछि तापरे जाई कि से किछि पचरिबो. A promise to pay a time paid debt. Time paid debt must be dash. Written and signed. Time paid debt माने होछि कोन गुटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर से कोन से डेट टा रीपे करिवो से जिंसटा कोन लेखाई कि थिबार अछि भल से ऑथराइज हे कि साइन हे कि थिबार अछि an agreement not supported by consideration is called dash nudum pactum मन रखिबा पॉइंट nudum pactum consideration is the price for which promise of the other is bought and the promise thus given for the value is enforceable. This definition of consideration is given by very irrelevant question. बिल्कुल भी आसिबनी. Pollock. A minor is a person who has not attained the age of 18. Last देखो questions. A contractor entered into an agreement with the government to construct a godown and received advance payments for the same. He did not complete the work and the government terminated the contract. तो एडी कौन हैला कौन से पचारची कौन ना तार दुख कहूची ये किछ तो पचारनी अच्छा से कहूची कॉन्ट्रैक्ट गुटे कॉन्ट्रैक्टर गुटे कौन गवर्नमेंट सहित एंटर हैला एग्रीमेंट भितर से कौन पे एंटर हैला
ना गोड़ा अंडा गोड़ी कंस्ट्रक्ट करियो कहि आ एडवांस पेमेंट भी से रिसीव कर देछ तो से कंप्लीट करनी वर्क डा तो गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देला वर्क टा टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट तो एबे कोन गवर्नमेंट क्लेम करि परिबो ना करि परिबोनी आली से पचारछ कर परियो ना कर परियोनी करि परियो गवर्नमेंट छाड़ दो एति जिनस आम पचार दरकार थिला ना कोन निजे जे क्लेम करथान ना एते रेस्पेक्ट भी आमे चाहुनो देखो लाइफ रे इंपोर्टेंस दरकार बट आमु पचारि डैमेज क्लेम करला वाला इंपोर्टेंस वी डोंट नीड A contracts to sing for B at a concert for ₹1000 which are paid in advance. A is too ill to sing. Which of the following options is correct? पैसा नहीं इल्ला तापरे तंटी बस पड़ला बेसी आइसक्रीम खाई देथियो 1000 टका नहीं जाईची हला तबे कोन हबो को A is not bound to make compensation to B for the loss of profit which B would have made if A had been to sing must refund to B 1000 paid in advance. हाँ मैंने बहुत बेकारिया क्वेश्चन डायडा से कहूची कि से को प्रॉफिट हला को प्रॉफिट अर्न करि थांदा से जिंस पे ये दाई नहीं कि ता लॉस पे ये दबनी बेचारा एबे तार देव भल नहीं ता 1000 टका ले से नहीं थियो जोडा कि से ऑलरेडी खर्च करी आइसक्रीम खाई दीछ हला से 1000 टका तो देई दबो आ बाकी कोन पे किछि दबो इन द क्वेश्चन पचरले पिट्टी दा कथा a person contracted to deliver a part of a specific crop of potatoes. The potatoes were destroyed by blight through though no fault of the party. The contract is dash void due to frustration of contract. एबे contract को एले frustration पड़ा A paid ₹500 to government servant to get him a contract for the canteen. The government servant could not get the contract. A can recover ₹500 paid by him to the government servant. कौन हबो एड आंसर को भाभी चिंती को रे आंसर कौन नो आइडिया A paid ₹500 to government servant to get him a contract for the canteen. कैंटीन को कॉन्ट्रैक्ट आनिबा पई ये ताऊ 500 टका देला कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं कॉन्ट्रैक्ट आनिया पई कावडे 500 देगी तो आने कइले द गवर्नमेंट सर्वेंट कुड नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट ताको मिलना नहीं कैन ए रिकवर 500 पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ए रिकवर करि परिबो की कोन पे करि परियोनी बस एग्रीमेंट आका वॉइड अछि एंड जो जिंसडा अछि सेडार किछि सर्टेनिटी नै ऑब्जेक्टर किछि सर्टेनिटी नै नो सर्टेनिटी लिखि दियो इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट जॉब A borrows from B ₹500 to bet with C. Can B recover the amount of his loan? करि परियो ना करि परियो नी कौन पे void बेगरिंग एग्रीमेंट एडा गोटे माने कोन बेटिंग लॉटरी गैम्बलिंग एवडा सब कोन बेगरिंग एग्रीमेंट तो दीस थिंग्स आर void A borrows ₹5,000 from B to purchase a revolver to shoot C. Can B recover his loan of ₹5,000? इमती क्वेश्चंस आसी परिबो कौन पे void सेम आंसर सेक्शन 23 कोन सेडी तमे पाखरे लिखि बार अछि हैला $55 जे देखो A and B agree that the law of limitation shall not apply to them. A debt becomes time-bound and A refuses to pay the amount. Can C recover the amount under the terms of the agreement? करि परियो ना करि परियो नी agreement falls under section 23. तो तमरो होमवर्क रहला section 23 कोन सेडा लिखिबार जोडा कि तमे करियो नी मु जानची सेति पे मु आगा लिखेती कोन हां फर्स्ट ऑफ ऑल मु गोटे स्टूडेंट हेबे टीचर हेबे हैला तापरे मो सेडी गोटथरे जी जाई आसी आ थरे एडियस लेखो certain agreements
certain agreements कौन लिखुन जगह नहीं किणिया की जगह गोटे certain agreements are void if certain agreements are void if its object or consideration is unlawful if its object or consideration is unlawful माने कौन unlawful माने prohibited by law जदि law सेटा को prohibit करछि prohibited by law fraudulent ହେଇछि एडा involves injury to other person involves injury to other person immoral and opposed to public policy 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 एतिकी जिनस हेले जाई कौन हम आमर हैला लिखिले एतिकी लिखु चला हेला एडा खाली बुझे दी हेला तो चारटा जिनस हेले कौन एग्रीमेंट गुडा को वॉइड हो जिबा हमरो फर्स्ट थिंग होची लॉ जदी प्रोहिबिट कर दोची सेकंड थिंग होची जदी फ्रॉडुलेंट मेथड्स एडॉप्ट करचंदी थर्ड थिंग होची अदर पर्सन जदी इंज्योर हेबार चांसेस अछि एंड फोर्थ थिंग होची पब्लिक पॉलिसी को जदी अपोज होची पब्लिक को किछि हार्म होची ठीक अछि द रिमेनिंग थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास फाइन